हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम मैथ्स रीत अकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा, और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके। सो आज के क्लास में हम सिमिलर मैट्रिसेस एंड कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, और उनके ऊपर जो रिजल्ट्स हैं, उनके ऊपर जो थ्योरम्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे और कैसे वो अप्लाई होते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके। तो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ द similar matrices. Okay, so let's define first the similar matrices. Similar matrices. So if two matrices A and B said to be similar, it means there exists some non-singular matrix C, or you can say there exists any non-singular matrix such that the inverse of that matrix and matrix B with that matrix is equal to the A. Okay, so if I'm just saying कि हमको एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाती है, देयर एग्जिस्ट सम मैट्रिक्स सपोज दैट सी, so such that A is just equal to C inverse B of C, or we can say that B is just equal to this is this is C A of C inverse in this way. Okay, so let's define it in the formal way. So you can just say two matrices A and B two matrices A and B are said to be similar, said to be similar if there exists a non-singular, non-singular with which determinant is non-zero and inverse of that matrix is exist. Non-singular matrix C such that this is E can be written like this is equals to C inverse B of C. Okay, अगर हम B की तरफ से देखेंगे, this implies you can say also that is your C of A, C inverse is just equal to B. Okay, so then we can say this is A and B are the similar matrices to each other. Okay, so we have some results on the similar matrices. कौन कौन से हैं? So the similar matrices have the same determinant, same trace and rank. Okay, so similar matrices, you can just write here, similar matrices have same determinant, trace and rank. So two similar matrices have the same thing. So if we can able to prove that two matrices A and B are similar, then we can easily say that the determinant is same, trace is same, and rank of the matrices is same. Okay. Second result we have on the similar matrices, if the two matrices are similar, they equivalent also. They are equivalent also. Okay. So if the two matrices are similar, then they are equivalent also.
there is another result. Two equivalent matrices need not to be similar, क्योंकि अगर हमारे पास इक्विवेलेंसी सिमिलरिटी को इम्प्लाई कर रहा होता तो भी हम डिफिनीशन की हम बात ही नहीं करते. सो if matrices are similar they will be equivalent, but if the matrices are equivalent then there no need to be similar, है ना, जरूरी नहीं वो similar होंगे. ओके, तो if two matrices you can write, if two matrices are equivalent, if two matrices are equivalent then they need not be similar. ठीक है, if two matrices are equivalent then they need not be similar, जरूरी नहीं वो similar हो. Okay, so let's define the congruent operations first, then we define the congruent matrices. So congruent operation क्या होता है कि we are applying some row operation, so the same column operation will also be applied there in a matrix. So you can just learn about the congruent operations. Congruent operations, okay. So a congruent operation is what? A congruent operation on a square matrix is an operation in which every row operation is followed by the corresponding column operation. Okay, so it means a same. If I'm interchanging two rows, then we will have to interchange two columns. Okay, so a congruent operation is together, two operation together, one row and the same row operation जो हमने same row operation लगाए हैं, then also will be the same column elementary operation. Okay, so the congruent operation on a square matrix is an operation in which every row operation is followed by a corresponding column operation. Okay, तो तब उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन बोलेंगे. ठीक है, सो when two matrices will be congruent if there exists some non-singular matrix P such that A just equal to P dash B or P is equal. Okay, then we can say कि two matrices are congruent matrices. So let's define define the congruent matrices now. Congruent matrices. Okay, so two matrices A and B, are said to be congruent if there exist
if there non-singular exists a non-singular matrix P such that this is A is just equal to P dash B of P. Symbolically, you can just write in this way. A is congruent to B. Okay, so ये तो एक फॉर्मल डेफिनेशन होगी कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट ए इक्वल्स टू पी डैश बी ऑफ पी। ओके, हमारे पास सिमिलर में क्या होता था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए सच दैट उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करते थे एंड सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। यहां पर हम ट्रांसपोज की बात करते हैं, तो आपको रिमेंबर रखना है कि जब कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो वी विल फाइंड ए, या we can say कि A can be written as this B P transpose B into P. But in a similar matrices, if there exists some non-singular matrix C such that A equals to C inverse B of C, B into C. Okay. इसको हम दूसरे इन अदर वे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एक मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस को अप्लाई करके दूसरी मैट्रिक्स बनी है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस होती है। ठीक है, यू कैन आल्सो राइट इन दिस वे टू मैट्रिसेस A and B are said to be congruent if they can be obtained they can be obtained from each other by applying congruent operations. जैसे कि अगर हम we just take a matrix, suppose that हमने एक मैट्रिक्स लिया 3 by 3 ले लेते हैं, 1 2 1 3 -2 1 0 3 1, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसमें हमने ऑपरेशन लगाया, इफ आई एम जस्ट कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन हमने लगाया, हमने रिप्लेस करा दिस R1 विद R2। हमने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करा। तो हमने जब R1 R2 को इंटरचेंज करा तो दिस इज 3 -2 1। ओके, अभी इसको इक्विवेलेंट ही बोलोगे। दिस इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, यू नॉट गोइंग टू से दिस इज इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने रो ऑपरेशन लगाया है, सिंगल कॉलम ऑपरेशन लगाया है, डिफरेंट डिफरेंट रो और कॉलम ऑपरेशन लगाए, बट अभी हमने क्या करा कि हमने फर्स्ट रो को सेकेंड रो से इंटरचेंज करा। ठीक है, तो दिस इज 1 2 1 एंड दिस इज 0 3 1। ओके, अब इसमें यू विल हैव टू, अगर हमें कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो हमने रो ऑपरेशन लगाया एंड सेम करेस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, C1 इज इंटरचेंज विद C2। तो अब हमें यहाँ पर C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करना होगा इस मैट्रिक्स के अंदर। तो अब जब करोगे तो यू विल हैव इन दिस वे, दिस इज -2, सेकेंड कॉलम अब फर्स्ट कॉलम हो जाएगी दिस वन, एंड दिस इज 3 1 0 and this is 1 1 1। okay, so now this matrix is, अगर मैंने इसको A कहा तो दिस मैट्रिक्स दिस इज B, तो दिस इज नाउ कॉन्ग्रुएंट विद दिस A। क्लियर? सो हम एक रो ऑपरेशन कोई भी लगाया, फिर उसके बाद दूसरा हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया, सेम करेस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन वी विल अप्लाई। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा रो ऑपरेशन लगाते हैं तो सिमिलरली वी कैन फॉलोड बाय द सब कॉलम ऑपरेशन। तो इन दिस वे जो भी हमारे पास मैट्रिसेस मिलेंगी वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो टू मैट्रिसेस A and B are said to be congruent if they can be obtained from each other by applying the congruent operations। okay,
जैसे कि हमारे पास रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होती थी, उसमें हम रो ऑपरेशन लगा के दूसरी मैट्रिक्स बनाते थे, तो वो रो इक्विवेलेंट होती थी। इसी तरह कॉलम इक्विवेलेंट होती थी। और हमने फिर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि दो मैट्रिसेस इक्विवेलेंट होती हैं अगर उनमें कोई भी ऑपरेशन लगाया गया है, रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के उसे ऑब्टेन किया गया है। ओके, तो इन द सिमिलर वे वी कैन जस्ट से, got it? So this is the definition for the congruent matrices and similar matrices की definition हमने पढ़ लिया। Let us write some results on the congruent matrices। तो सिमिलर मैट्रिसेस में हमने देखा था डिटर्मिनेंट, ट्रेस एंड रैंक इक्वल होता है। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस में रैंक ही केवल इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस नीड नॉट टू बी इक्वल, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस से रिलेटेड आइए रिजल्ट्स लिखते हैं। तो थ्री रिजल्ट्स हमने लिखे थे सिमिलर से रिलेटेड, अब फोर्थ रिजल्ट लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट के ऊपर। तो कॉन्ग्रुएंट congruent matrices have same rank, but need not have same determinant and trace। हमने देखा था कि सिमिलर मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट और ट्रेस भी सेम होता है, बट कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस में जरूरी नहीं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस में हमारे पास रैंक ही केवल हम कंफर्म होते हैं कि रैंक हमारी सेम होगी, बट वी नॉट एबल टू से एनीथिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। और दो कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस इक्विवेलेंट भी होती हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस तो बेसिकली हम रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे कि हमने दूसरी मैट्रिक्स बनाए होते तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लगा क्या रहे होते हैं, रो और कॉलम ऑपरेशन ही लगा रहे होते। बट जब हम एक रो ऑपरेशन को किसी दूसरे कॉलम ऑपरेशन मतलब करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन फॉलो करेंगे, देन वी कैन से कि वन कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन बी अप्लाइड इन अ मैट्रिक्स। ओके, बट बेसिकली हम रोज और कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करके अनदर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स भी हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है। तो यू कैन जस्ट हैव अ रिजल्ट। सो if two matrices are congruent, then they are equivalent also। Okay, so if two matrices are congruent, then they are equivalent also। If two matrices are equivalent, then they need not to be congruent। Okay, if the two matrices are equivalent, then they need not be congruent। तो जरूरी नहीं वो congruent हो। Next result, every matrix congruent to a symmetric matrix is a symmetric matrix। It means that कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास एवरी मैट्रिक्स वो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रही होगी। Non-symmetric matrix is never be congruent to the symmetric matrix। Okay, so every matrix congruent to the symmetric matrix is a symmetric matrix। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर अगर कोई मैट्रिक्स है वो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स कैसी रही होगी, सिमेट्रिक रही होगी। ओके,
और वी कैन आल्सो प्रूव इट, है ना, अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो वी कैन आल्सो राइट द प्रूफ ऑफ इट सिंपली। इफ यू आर सेइंग कि हमारे पास एक ए है विच इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, matrix P. ठीक, so this implies this A will be equal to this is P dash B of P, है ना। अब हमको क्या दिखाना है कि जो A है वो भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए क्या दिखाना होगा, उसके लिए आपको दिखाना होगा दिस इज वी हैव टू प्रूव दिस इज A डैश A ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू, ये हमको चेक करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको इसका ट्रांसपोज लीजिए, जस्ट इज P डैश B ऑफ P का होल ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होता है, तो दिस इज पी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, पी ट्रांसपोज ओके, बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा क्योंकि बी सिमेट्रिक है, और पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास फिर से पी हो जाएगा। यहाँ पर सिंस पी डैश इक्वल्स टू बी इट इज सिमेट्रिक, तो हम देख पा रहे हैं कि दिस इज यू गेट ए अगेन, okay, you get the A again, so this implies you can say A dash is equals to A, so this implies A is symmetric. Okay, so if a matrix is congruent to a symmetric matrix, so that matrix is also symmetric one. Okay, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिजल्ट नंबर 9, सॉरी 8, 7 लिखा है। So similarly, if a matrix is congruent to a square symmetric matrix, then matrix is also square symmetric. So you can just also write, so matrix every matrix congruent every matrix congruent to a skew symmetric matrix is skew symmetric. Okay, every matrix congruent to a skew symmetric matrix is skew symmetric. Okay, तो इसको भी आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हो जैसे हम ऊपर प्रूव करा है। So I'm not going to write the proof here. This is very important result. A non-singular matrix or non-singular symmetric matrix is congruent to its inverse. इस रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं तुम्हारे CSIR नेट के अंदर, तो यू कैन जस्ट राइट इट important also. So a non-singular symmetric matrix is congruent to its inverse. Okay, so let's prove कि हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो अपने इनवर्स के कॉन्ग्रुएंट हो। ओके, okay, so if I'm just taking A is a non-singular symmetric matrix and we have to show that A is congruent to its inverse A inverse. Okay, तो नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही करेगा। तो let A be a non-singular symmetric matrix and let हम सिंपली जो P है उसको हमने A इनवर्स ही मान लिया। ठीक, P just equal to A inverse. ओके,
और क्योंकि हमारे पास ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स भी नॉन सिंगुलर होता है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक पी है, वो उसको हमने ए इनवर्स माना है। अब हमको क्या देखना है, देन वी कैन इजीली सी कि हमारे पास जो पी डैश ए ऑफ पी, इसकी हम बात करते हैं, तो पी डैश की जगह हो जाएगा दिस इज ए इनवर्स का डैश, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक। ए इनवर्स तो तुम्हारे पास ए और ए इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देंगे, तो दिस यू विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर। so this will be your identity matrix and here you will get a dash and this dash identity, okay, because a inverse will be identity। you can see कि हमारे पास you will have only this matrix here, और इसको आप लिख सकते हो a dash का इनवर्स। ठीक। इनवर्स एंड द ट्रांसपोज विल बी इंटरचेंजेबल। सो यू कैन, अच्छा, क्योंकि ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर भी है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, so you can have this is your a inverse since a dash is just equal to a, so this is the non singular symmetric matrix, इसका मतलब transpose of a will be equal to a। तो यहां से हमको क्या मिल गया, you will get a bell, this is a you are not going to see, तो हमने p की जगह पर हमने ए इनवर्स ही ले लिया, जो कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी ए इनवर्स। तो यू कैन जस्ट हैव दिस, इट मींस वी हैव अ there exists a matrix P such that transpose of that matrix it just gives the A inverse. So this implies A is congruent to A inverse. तो if matrix is यहाँ पर दो conditions हमारे पास यूज, एक तो non similarity of a matrix will be used and second the symmetric one। ठीक है, तो matrix is non singular symmetric, then that matrix will be congruent to its inverse matrix। okay, तो नेक्स्ट रिजल्ट की हम बात करते हैं अब यहाँ पे। सो अ मैट्रिक्स ऑफ पॉजिटिव रैंक, मैट्रिक्स ऑफ पॉजिटिव रैंक इज कॉन्ग्रुएंट टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ इट इज सिमेट्रिक। Okay, so a matrix of positive rank is congruent to a diagonal matrix if and only if it is symmetric। ठीक है, तो क्योंकि रिजल्ट हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का है, तो if matrix is symmetric then that will be definitely congruent to a diagonal matrix। if a matrix have a positive rank uh, and which is congruent to a diagonal matrix, then that matrix should be symmetric, वो symmetric ही होगी। ओके, सो आइए जो हमने अभी तक के पढ़े उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो रो इक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करना और मैट्रिसेस के बारे में, सिमिलर मैट्रिसेस है, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस है, और जो हमने इक्लेन फॉर्म्स के ऊपर रिजल्ट्स पढ़े थे कि कब हमारे पास रैंक कैसे हम मैट्रिक्स की निकालते हैं, तो ऑल दीज आई एम गोइंग टू लर्न सम प्रॉब्लम्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन एक एग्जांपल करते हैं। ओके, सो first question is this, reduce to row echelon form, row echelon form the matrix A, this is the matrix A which is given in this way: 6 1 3 8 4 2 6 minus 1, and this is your 10 3 9
7, and this is 16, 4, 12, and this is 15. Okay, and also find rank ऑफ ए। तो जब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो इजीली यू कैन एबल टू सी द रैंक। तो आइए जरा इस प्रॉब्लम को कर लेते हैं, तो हम फिर उसके बाद आपको ढेर सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। तो राइट द सोल्यूशन ऑफ दिस। सिंपली हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है। वी हैव दिस मैट्रिक्स 6 1 3 8 4 2 6 -1 10 3 9 7, and this is 16 and 4 12 and 15। सो पहला जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वी विल मेक इट हेयर 1। ओके, तो अगर हम इस भाई ब्लैंक स्क्रीन क्यों आ जाता है? ओके, सो जो फर्स्ट, देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा। हम जब फर्स्ट रो में आएंगे तो फर्स्ट रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढेंगे, तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक, तो अब इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को हमें, जो उस कॉलम में उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करना है। मतलब इस एलिमेंट को हमें जीरो करना है, इस एलिमेंट को जीरो करना है, इस एलिमेंट को जीरो करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, वी जस्ट अप्लाई द ऑपरेशन दैट R2 - R1 R3 - R1 या R4 - R1 इन दिस वे, सो दैट वी गेट जीरो जीरो हियर। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लें कि इसको 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे, ताकि यहां 1 आ जाएगा, तो वी कैन इजिली अप्लाई द ऑपरेशंस। ओके, तो सबसे पहला हमने ऑपरेशन जो लगाया है वो हमने फर्स्ट रो को 6 से डिवाइड कर दिया। जब हमने 6 से डिवाइड करा तो वील गेट 1। यहाँ पर 1/6 आ जाएगा, और ये 3/6 आ जाएगा, और ये 8/6 आ जाएगा। एंड देन वी हैव, अभी हमने केवल फर्स्ट रो में ही ऑपरेशन लगाया है, तो यू कैन जस्ट इन दिस वे, दिस इज 4 12 एंड दिस इज 15। ओके, तो यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन लगाया है, दिस इज, यू कैन से अप्लाइंग, this is R1 is replaced with 1/6 times of R1। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब सिंपली, क्योंकि हमको अब बहुत आसान हो जाएगा कि कौन किससे सब्ट्रैक्ट करें, कि यहाँ पर हमारे पास, तो दिस इज 1/6 3/6। पहली रो अब नहीं चेंज करना है, अब हमको सेकेंड रो चेंज करना है। वी गेट नीड जीरो हेयर। तो जीरो कब आएगा, तो अगर हम R2 को रिप्लेस करें, R2 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ R1, और R3 को रिप्लेस करें, दिस इज R3 माइनस का 10 टाइम्स ऑफ R1, और R4 को रिप्लेस करें, दैट इज योर व्हाट, R4 को रिप्लेस करें हम, R4 माइनस का 16 टाइम्स ऑफ R1, तो हमको जीरो मिलेगा। तो आइए 1/1 करते हैं। पहले तो हमने ये ऑपरेशन लगाना है। सो यहाँ तो जीरो आ गया, देयर नो नीड टू नीड कैलकुलेशन। एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 -4/6। इसका मतलब 2 माइनस, दिस इज 2/3, तो 3 2 6 -2, इट इज 4/3। तो ये तुमको क्या मिलेगा, यू विल गेट 4/3 ही। दिस इज गेट 4/3। सिमिलरली 6 6 माइनस, दिस इज 3/6 माइनस 4 to the 12 है ना। दिस इज 3/6 इंटू 4, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा
तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 3 to 6, कितना हो जाएगा, दिस इज 3 6, ये 2, इट मीन्स यू विल गेट 4 हेयर, तो यहाँ पर 4 मिलेगा। फिर सिमिलरली माइनस का, और माइनस का 4 into 8/6, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3, एंड दिस इज 16, -16 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा -19/3, तो आंसर आ जाएगा -19/3। तो इन द सिमिलर वे, इफ यू आर कैलकुलेटिंग विद द with third row, so 10 minus 1, 10 minus 10 times is 0, and then 3 minus 10/6, so this is 3 minus, you can just have 3 minus 10 times of 10/6, so you will have 5/3, so 9 minus 5/3, it means again 4/3, so you will get 4/3 here, and here you will get 4 again, and here you get -19/3, and the similar way you will get 0, and this is 4/3, and this is 4, and this is -9। तो इस तरीके से आप ये ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे सारे। तो अप्लाई करने के बाद यू विल गेट इन दिस वे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो थर्ड फोर्थ और थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ रोज हैं वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है, तो यू कैन इजीली सी दिस इज 1/6, 3/6। अब हम सेकेंड रो में आएंगे, और सेकेंड रो के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट देखेंगे, तो ये हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, तो अब उसके नीचे के एलिमेंट्स हमको सारे जीरो करने हैं। तो दिस इज 0, दिस इज 4/3, दिस इज 4, एंड दिस इज योर -19/3। ओके, और इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो करने के लिए आप क्या लगा दे, R3 इज रिप्लेस विथ R3 माइनस R2, और R4 इज रिप्लेस विथ R4 माइनस R2। तो ये सारे के सारे को क्या आइडेंटिकल है, यू विल गेट 0 हेयर। ओके, अब हम इसके डायगोनल पे हमें 1 बनाना होता है, तो यू कैन जस्ट फाइंड द 1 इन द डायगोनल। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं of this one, तो 1/6, दिस इज 3/6, दिस इज 8/6, तो यहाँ पर 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 1। हमको R2 में करना है 3/4 ऑफ R2। ठीक है, तो 3/4, इसका मतलब यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -19/4, और ये सारे तो जीरो ही रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दो नॉन जीरो रोज मिल गई। प्योर पोजीशंस यहाँ पर कितने हैं, दो, ये हैं दो प्योर पोजीशन। ओके, तो हमारे पास जो रैंक है, तो दिस इज योर रो इक्विवेलेंट फॉर्म, REF। ओके, एंड जो रैंक है ए की, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज योर 2, दैट आर 2 नॉन जीरो रोज। ओके, देयर आर 2 प्योर पोजीशन या 2 नॉन जीरो रोज। ओके, तो इस तरीके से रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी मैट्रिसेस को, उसके बाद हम इजिली उसकी रैंक को देख लेते हैं। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा और आप कर पाएंगे। तो आप इन इस तरीके के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे, है ना, कि मैट्रिसेस का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और कैसे उनके ऊपर हम काम करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स विथ मी। तो हम लोग सेकेंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ओके।